Welcome to the Bhakti Narsimha Swami Maharaj. So now we chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Maharaj hails from South Africa and he is a sannyasi for very long, and he joined ISKCON in 1986 and he joined ISKCON under his Kansa Hanta Prabhu. तो महाराज जो है ISKCON ज़ूलैंड में 1986 में ज्वाइन किया और उन्होंने जो है जिम्बाब्वे में प्रीचिंग पहले शुरू करी. So he started preaching in Zimbabwe first and 1990 में जो है वो यूके में गए, बर्मिंघम में महाराज ने प्रीचिंग करी और उसका साउथ अफ्रीकन टेम्पल्स में, डरबन में, केप टाउन में, ईस्ट अफ्रीका में, कीनिया में, उगांडा में और 2003 तक है महाराज एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग करते रहे और So became a sannyas candidate in 2005 and entered into the sannyas ashram in 2008. 2008 से महाराज है संन्यास ग्रहण किया महाराज ने और महाराज जो है साओ पोलो ब्राजील में बेस्ड है और वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, रशिया, इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो प्रीचिंग करते हैं. Maharaj was telling us that he has been in India for the last 1 month and he will stay here till around 15th of April when he flies back to Kenya from here. So he will go to Mayapur, he will go to Vrindavan, he will go to the south, he will join his own Japataka Swami Maharaj in the Safari Yatra and he will preach extensively. So we once again welcome, heartily welcome by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And it's a departing gift of the 2024 that the last Sunday of the 2024 we are getting the association and blessings from His Holiness Bhakti Narsimha Swami Maharaj.
2, 1. Or 2, 140. Yes. This one. Jaya Radha
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Granthara Srimad Bhagavad Gita ki, Nitai Gaura Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 1, Observing the Armies, and the text is text number 14. You can all hear me. You need Hindi translation? नहीं. अंग्रेज जानते हैं? Okay, ठीक है. Not all. Okay, good. I'm also not Anglais man. I'm not English. I learn in school. I speak Zulu. My language is different. I'm not Englishman also. Okay, text number 14. Tata Sutar Hayerute Mahadisyandanistito Madhava Pandavascheva Divya Sanko Pradatmatu. Translation. Oh, you want to repeat? Okay. Oh, it's on the board? Okay, it's okay. Translation. On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental counsels. दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए. You read the purport. तात्पर्य की जय. भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है. दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे. जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दना. जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं. और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पिता के बिना नहीं रह सकती, अपने पति के बिना नहीं रह सकती. अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थीं. इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी रह जाएगा, वहाँ विजय निश्चित है. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So this is the first chapter of the Bhagavad Gita, which gave us a view to the setup at Kurukshetra. तो ये पहले अध्याय का पृष्ठभूमि है, जिसमें हमें जो है भगवद गीता की पृष्ठभूमि मदद करती है कि कैसे युद्ध हुआ. Generally, not many speakers speak on these verses. I like them. I say mainly speakers don't speak on chapter 1 of Bhagavad Gita, but I like it. महाराज ये बता रहे हैं कि ज्यादातर जो प्रवचन करता है वो पहला अध्याय पर नहीं बोलते, लेकिन महाराज को पहला अध्याय बहुत पसंद है. Because there are so many hidden points in the Bhagavad Gita. क्योंकि इसमें बहुत सारे छुपे हुए पॉइंट्स हैं भगवद गीता के. They are secrets. वो इसके रहस्य हैं.
So here in this chapter, the first name which Krishna is addressed with in Bhagavad Gita is Madhava. तो यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण को जो पहले नाम से संबोधित किया गया है वो है माधव. Madhava is mentioned in this verse. Madhava, Pandava, Chaiva. तो यहाँ पर जो है माधव जो शब्द है वो प्रयुक्त किया गया है माधव पांडव. Why Sanjaya is using the name Madhava? The reason is because Madhava is a name for the husband of the goddess of fortune. तो यहाँ पर माधव जो शब्द इस्तेमाल किया गया है तो माधव का मतलब है कि लक्ष्मी के पति. So indirectly he was telling Dhritarashtra that Arjuna and his brothers will come out victorious in this battle because they had Krishna on their side. तो इनडायरेक्टली जो है धृतराष्ट्र को एक अप्रत्यक्ष रूप से जो है धृतराष्ट्र को सूचित किया जा रहा है कि कृष्ण जो है वो पांडव के पक्ष में है. So that's the meaning of Madhava, तो ये माधव का मतलब है. at least according to Prabhupada's translation to this verse. Madhava also can mean someone who is a descendant of the king Madhu of the Yadavas. तो ये जो है इसमें माधव जो है एक उसका एक दूसरा अर्थ भी है कि माधव के जो वंशज हैं उनको माधव कहा गया है, राजा माधव. So it is the goddess of fortune that blesses people with victory or opulence, not Krishna. तो जो माधव की पत्नी जो माधव जो लक्ष्मी है वो जो है वास्तव में आशीर्वाद देती हैं जिससे कि विजय सुनिश्चित होती है. For example, when Sudama Vipra went to Dwarka to meet Krishna, जब सुदामा विप्र कृष्ण से मिलने द्वारका गए his wife had sent him with a small package of rice. तो सुदामा की पत्नी ने उनको एक छोटा सा पैकेट दिया चिवड़े का, Which Sudama did not want to give to Krishna. वो सुदामा उनको देना नहीं चाहते, कृष्ण को देना नहीं चाह रहे थे. He hid it here, he didn't present it to Krishna. But Krishna knew that his wife gave him something for him. तो वो छुपा रहे थे उसको और कृष्ण को देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण को पता था कि इनकी पत्नी ने उनके लिए कुछ दिया है. So when they were sitting, Krishna said, Sudama, your wife gave you something for me, isn't it? He said, no. He said, yeah, she gave you something. No, I didn't mean it. जब साथ में बैठे हुए थे तो कृष्ण ने पूछा कि आपकी पत्नी ने मुझे कुछ आपको दिया है, तो उनका नहीं कुछ तो है. And then Krishna cut hold of Sudama's dhoti where he was hiding this rice. And then he took it out by force. और फिर कृष्ण जो है जबरदस्ती जो है सुदामा से वो पैकेट छीन लिया. And then he started popping it into his mouth and eating it. और फिर उसको अपने मुख में डालना शुरू कर दिया. All that is happening in front of Rukmini Devi, तो वहाँ पर इतने बैठे हुए रुक्मिणी देवी, who is the goddess of fortune also. तो रुक्मिणी देवी जो है वो लक्ष्मी का विस्तार है. So when Krishna was eating this rice for the third time, she stopped him. तो जब कृष्ण जो है वो ग्रहण कर रहे थे चिवड़ा, तो लक्ष्मी ने उनको रोक दिया. She said, you have eaten enough of this rice, and whatever you have eaten is enough to award him wealth in this life and in his next life. इतना आपने पा लिया है, ग्रहण कर लिया है, इतना पर्याप्त है जुलाना के लिए, इस जन्म के लिए और आगे वाले जन्मों के लिए. How did she know that? Rukmini, she knew that because she is the giver of wealth. तो रुक्मिणी को कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि वास्तव में जो आशीर्वाद देने वाली वो रुक्मिणी ही है. So when Sudama came home, what happened? जब सुदामा वापस लौटे तो क्या हुआ? I just came from that place. It's called Porbandhan in Gujarat. I went to see the home of Sudama when I was in Gujarat. महाराज पोरबंदर से लौटे हैं, वहाँ पर जो है सुदामा का घर है.
When he came back, he could not find his home. There was a palace instead of his poor house. तो जब लौट के आए तो वहाँ पर उनका घर नहीं था, वहाँ पर जो है महल बन गए थे. I think you know the story. So that was given by Rukmini Devi, who is the goddess of fortune. तो आशीर्वाद जो है वो रुक्मिणी देवी द्वारा गया, जो कि लक्ष्मी है, स्वयं लक्ष्मी है. So Lakshmi takes many forms तो लक्ष्मी जो है वो कई प्रकार के रूप ग्रहण करती हैं according to the desires of devotees, of her devotees. जिस तरीके की जो भक्तों की इच्छा होती है उसके अनुरूप. So we find in Burma Samhita it says Lakshmi, how does it say? It says, I forgot Burma Samhita now, but it says that the Lord is surrounded by many sahasra, thousands and thousands of Lakshmis. ब्रह्म संहिता बताया था कि भगवान कृष्ण है उनके सामने Lakshmi Sahasra Sam Brahma Sevyamanam, yes, is served by thousands and thousands of Lakshmi. हजारों लक्ष्मी भगवान कृष्ण की सेवा करती हैं. So there are many Lakshmis, बहुत सारी लक्ष्मियां हैं, but there are about 9 main Lakshmis that gives benedictions. लेकिन उनमें से 9 जो हैं वो मुख्य हैं जो कि आशीर्वाद देते हैं. One of them is called Kanti Lakshmi. जैसे कंठी लक्ष्मी का Kanti means this, jewelry, कंठी माला. and Kanti Lakshmi is responsible for beauty. कंठी लक्ष्मी जो है वो सौंदर्य प्रदान करती हैं. She's fulfilled desires. और वो इच्छाएं पूरी करती हैं. And splendor, things like this, jewelry, necklace of pearls, diamonds. जैसे गले में जो है मोतियों के और हीरों के हार होते हैं, ऐसे ये कंठी है. So that Lakshmi appears in the 10th canto when Balaram came from Dwaraka. He came from Dwaraka to visit Vrindavan alone without Krishna. ये लक्ष्मी प्रकट होती हैं भागवत में 10वें स्कंद में, जब बलराम जो है द्वारका से अकेले लौट के आते हैं भगवान कृष्ण के वृंदावन में. So he wanted to enjoy with his friends. He was drinking Varuni. वो अपने पुत्रों के साथ में आनंद लेना चाह रहे थे और वारुणी ग्रहण कर रहे थे. So in a sporting mood, he called upon Jamuna Devi to come so that him and his friends can swim. और उनके खेल में जो है यमुना देवी को बुलाया सो कि जैसे कि उनके जो मित्र हैं वो धारा में स्नान कर सकें और तैर सकें. So Yamuna refused to abide by Balaram's order. तो यमुना ने मना कर दिया कि मैं आपका कहना नहीं मानूंगी. So Balaram became very angry. He said, I will split you into small rivers with my plow. तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए, उनका कि आपको मैं नदी से बहुत सारे नालियों में प्रविष्ट कर दूंगा. And Yamuna came, apologized, तो यमुना ही और माफी मांगी. and then Kanti Lakshmi came, उसके बाद में कंठी लक्ष्मी प्रकट हुई and she gave Balaram new cloth, और बलराम को नए कपड़े दिए and she put lot of jewelry around Balaram. और बलराम जी बहुत सारे आभूषण प्रदान किए. And then another Lakshmi is called Adi Lakshmi, तो ये दूसरी प्रकार की लक्ष्मी है आर्य लक्ष्मी. and that is the origin of all Lakshmis. वो जो है सारी लक्ष्मी का स्रोत है. And then there is Dana Lakshmi. और धन लक्ष्मी, Dana Lakshmi is the one that grants Dana. और धन लक्ष्मी जो है भौतिक धन प्रदान करती है. So she gives wealth. तो वो जो है समृद्धि देती है. You found that in India, wherever Indian people are, in a shop there was a Lakshmi lamp. तो जहाँ पर भी भाषा में जाएंगे वहाँ पर लक्ष्मी का एक दिया जला सकते हैं. So that lamp is for Dana Lakshmi.
वो जो है धनलक्ष्मी के लिए बुलाया जाता है, so that he can come and bless that business with wealth. तो वो जो है भारत वर्ष में बहुत प्रचलित है। And then another Lakshmi is called Dhyan, like in Dhyan Yoga, Dhyan Lakshmi. और एक प्रकार की लक्ष्मी जो ध्यान लक्ष्मी है, ध्यान योग है, ध्यान लक्ष्मी है। So that Lakshmi is responsible for the agricultural bounty, if we want to harvest a lot. And then she's the one that when people worship, they harvest a lot of crop. तो जो किसान हैं उनको जब धान्य की आवश्यकता पड़ती है तो वो ध्यान लक्ष्मी को जो है उपासना करते हैं। And there is Gaja Lakshmi. और एक गजा लक्ष्मी है। So Gaja Lakshmi, she aids those who are doing animal husbandry, like farmers. तो जो पशुपालन करते हैं उनको उनके द्वारा खिलाई जाती हैं। And then Shantana Lakshmi, तो शांतन लक्ष्मी है। she aids people who want good children. She blesses them with good children. जिनको अच्छी संतान चाहिए उनके लिए शांतन लक्ष्मी है। Peaceful children, Shanti children, not the ones who are made to go nightclub. जो शांत बच्चे हैं वो उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वो बच्चे नहीं जो नाइट क्लब्स में जाते हैं। And then there's Veera Lakshmi. उसका एक वीर लक्ष्मी है। So Veera Lakshmi is Veera, just like we have Mahavira. तो जैसे महावीर हैं, Veera means warrior. So Lakshmi, the Veera Lakshmi is the one that is worshipped by warriors. तो जो लड़ाके हैं, जो दिन जो लड़ते हैं, उनके द्वारा वीर लक्ष्मी की पूजा होती है। She gives courage तो वो साहस से प्रदान करते हैं। and valor. और So she also make warriors victorious. वो जो है लड़ाई में विजय देती हैं। And then you get Vijay, Vidya Lakshmi. Vidya means knowledge. विद्या लक्ष्मी। So it's a Lakshmi that gives you intellectual ability if you want to be a pandit. अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्या लक्ष्मी की जो आपको सहायता करती है। And then there's another Lakshmi, it's called Vijay Lakshmi. There are many people that name Vijay Lakshmi. विजय लक्ष्मी है। So Vijay Lakshmi is the one that gives spiritual enlightenment. So that name in India is very common, Vijay Lakshmi. तो विजय लक्ष्मी जो है आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। So these are different forms of Lakshmi in relation to us. इस प्रकार हमारे संदर्भ में लक्ष्मी के कई सारे रूप ये मुख्य रूप हैं। Yes, so there is Dana Lakshmi, there is Vijay Lakshmi who gives the spiritual enlightenment. Vijay Lakshmi gives spiritual enlightenment. तो जो विजय लक्ष्मी है वो आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती हैं। Whereas Vidya gives knowledge. विद्या जो है ज्ञान प्रदान करती है। So these are different forms of Lakshmi. इसका विभिन्न रूप है लक्ष्मी के। Those who are in business, they worship Dana Lakshmi, the Lakshmi that gives wealth. जो व्यापार में लगे हुए हैं वो धन की पूजा करते हैं जो कि धन देती हैं, भौतिक संपदा देती हैं। So here they say Madhava, the husband of the goddess of fortune. यहाँ पर कृष्ण को माधव कहा गया है जो कि लक्ष्मी के पति हैं। So as you all know, the Pandavas became victorious. तो जैसे जानते हैं कि पांडवों को जो है विजय प्राप्त हुई युद्ध में। Actually, the Pandavas were favored by all the devas, even Lakshman, Hanuman. इसीलिए जो है सारे देवताओं ने पांडवों की सहायता करी। So Hanuman agreed to be with the Pandavas, but he was invisible. He was not visible. He was just making noise on top of Arjuna's flag. तो हनुमान ने भी सहायता करी और हनुमान जी हैं वो प्रकट रूप से नहीं थे, प्रत्यक्ष रूप से जो है वो
आवाज़ें निकाल रहे थे। So the Pandavas were favored by all goddesses and the gods. तो जितने भी देवी देवता हम सबने क्या करी, पांडवों की सहायता करी। Therefore, in the end of Bhagavad Gita, Sanjaya tells Dhritarashtra, whenever there is Krishna, the master of mystics, Yogeshwara, तो इसलिए भगवद गीता के अंत में संजय धृतराष्ट्र बताते हैं कि यहाँ पर जो है योगेश्वर कृष्ण हैं, there will be a victory. वहीं पर विजय होगी, There will be morality, वहीं पर विनयता होगी, opulence, वहीं पर संपन्नता and होगी extraordinary power. और अत्यधिक बल प्राप्त होगा। Yes. So that is Krishna. He is Yogeshwara. ये कृष्ण योगेश्वर। He told Duryodhana, I'm not going to fight. You can have me without fighting. तो उन्होंने दुर्योधन को बोला कि आप जो मेरे को ले सकते हो लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। Duryodhana said, why have you Krishna without fighting? I'll take your army. दुर्योधन ने कहा कि मैं आपको क्यों लड़ोगे, नहीं तो आपको क्यों लूं, मैं आपकी सेना को लूंगा। He said, Arjun, I'm not going to fight. You have me, but I'm not going to fight. Yes, I want you. You don't have to fight, it's okay. तो अर्जुन को जो उन्होंने ये प्रस्ताव किया, लड़ाई नहीं करूंगा, तो अर्जुन को कि हाँ मैं आपको लूंगा, अरे आप लड़ाई ना करो। And Krishna says, okay, I will drive your chariot. तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं आपका रथ चलाऊंगा। But while he was driving the chariot of Arjuna, he was driving the minds of everyone on the battlefield of Kurukshetra. तो जब वो रथ चला रहे थे तो सबके जो है मन को भी उसी तरह से चला रहे थे। So in that way, why Krishna? Krishna came for three things. Paritranaya sadhunam, vinaschaya chatuskritam, and to establish dharma. Dharma samspadanataya sambhavam yuge yuge. Every millennium I come for this purpose. तो हर ब्रह्मा के एक दिन में जो है भगवान कृष्ण आते हैं तीन काम के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए। So he made a plan to gather all those duskritans at Kurukshetra. उन्होंने सब दुष्कृतियों को इकट्ठा कर लिया कुरुक्षेत्र के मैदान में। So they were there. तो सब वहाँ पहुँच गए। So Arjuna was doubtful. He was saying, why should we fight? तो अर्जुन जो है वो पशु पड़ गया कि मैं क्यों लड़ूं? And Krishna showed him the universal form. I've already destroyed all of them. Just become an instrument, O Sabyasachi. तो कृष्ण ने उसको जो है अपना विश्व रूप दिखाया और कहा कि आप केवल निमित्त मात्र बन जाओ। Sometimes even people in India don't understand why Krishna encouraged Kurukshetra. कई बार लोग ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण ने वहाँ कुरुक्षेत्र को क्यों प्रमोट किया। So this creation is about three things. कृष्ण जो है सब जानते हैं तीन चीजों के लिए। One is Bhagavan, एक भगवान who create. जो कि सृष्टि रचना करते हैं। Number two is Prakriti, material nature. दूसरा जो प्रकृति है जो मटेरियल नेचर है। And then Jivatmas, us. और तीसरे जो है जीवात्मा है, जैसे हम। So Krishna says, Sarva yonishu kundeya murtaya sambhavanti. Yeah, tasat brahma yonir aham bija. Aham bija. What's it? Yes, I'm aham bija. Yes, he's a Mahapita. He says, everyone is born into this nature according to the arrangement of material nature. But I am the seed-giving Father. बताते हैं कि सब सारी योनियां इस भौतिक प्रकृति में प्रकट होती हैं, लेकिन उनका बीज प्रदाता नहीं हूँ। Many people don't know this. काफी लोग उसको नहीं जानते। So, all those in human form, जितने भी मनुष्य प्रकट हुए हैं, they have what is called duty. उनका कर्तव्य है। So Bhagavad Gita chapter 3 text number 10 he explains what is this duty. भगवद गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण को कर्तव्य बताते हैं कि क्या कर्तव्य है। Saha yagya prajashritva puravacha prajapati.
that in the beginning, the Lord of all sacrifice sent forth the generations of devas and men into this material creation and gave them the blessing. What was that blessing? तो बताते हैं कि प्रकृति के प्रारंभ सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने देव और असुरों को यहाँ पर भेजा और उनको कुछ आशीर्वाद दिए। क्या आशीर्वाद थे? The blessing was yagya. Saha yagya prajashito. He said, you perform yaga, yaga will give you all good things. तो उन्होंने कहा कि आप यज्ञ कीजिए और यज्ञ आपको इसके साथ आपको सारे वांछित वस्तु प्राप्त हो जाएंगे। And you will attain moksha. और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। So when the demons are in control, what do? They stop yagya. तो अप्सरा क्या किया? वो यज्ञ बंद करा दिया। They stop any religious activity. तो जितने धार्मिक कृत्य सारे बंद करा दिए। Therefore, Krishna says, Prakriti kriyamanani gunai karmana sarvasaha ahankara vimudatma kattaham iti manyate. They think that they are in control of everything. That is controlled by material nature. तो सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, हम जो नियामक हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति के द्वारा नियंत्रण होते हैं। So when he come, he removed them by force. तो जब कृष्ण आते हैं तो वो बलपूर्वक उन्हें हटा देते हैं। And establish dharmic leadership. और फिर जो है वो धार्मिक नेतृत्व की स्थापना करते हैं। Why this is so important? ये महत्वपूर्ण क्यों है? Because dharma refers to the original nature of everything. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि धर्म जो है वो जो देवताओं की है वो मूल प्रकृति है। Sometimes people have debates. Which is the best religion? तो कई बार जो है ऐसा बहस छिड़ती है। Like there is this scholar from India called Zakir Naik, big Rakshas. Zakir Naik He thinks that he knows everything. You talk about Mahabharata, he knows it. Bhagavad Gita, he knows it. Ramayana, he knows it. He knows even Rig Ved, Atharva Ved, Yajur Ved, everything. Purana, he knows. I know all the Puranas. तो भी कहते हैं कि सब जानता हूँ, चाहे महाभारत है, चाहे वेद है, चाहे महाभारत है, चाहे गीता है, सब जानते हैं। But what is the purpose of the Vedas? लेकिन वेद का जो है क्या इस्तेमाल है? Krishna's Bhagavad Gita chapter 15, it says the purpose of the Vedas is to understand him. बताते हैं पत्र ज्ञान है कि जो वेद का जो निष्कर्ष है वो मेरे को जानने के लिए है। But Zakir Naik, he doesn't know that. जाकिर नायक को पता नहीं है। And he talks like a big pandit. But he has no bhakti. वो बड़े विद्वान की बात करते हैं लेकिन उनको भक्ति का। And he defeats many people. और वो कई लोगों को धोखा दे रहे हैं। Because he has studied so many books. Many of our books he knows. We don't know his Quran. काफी सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है। So the purpose of the Bhagavad, of the Vedas is to understand Krishna. तो जो वेदों का जो मूल उद्देश्य है वो है भगवान कृष्ण को जानना और भक्तों की भक्ति प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना। That is Dharma. वो धर्म है। Just like Prabhupada was in Australia, प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में Prabhupada is very brilliant. He's not PhD like this Dr. Zakir Naik. उन्होंने बहुत अच्छे से प्रचार किया। But he has Gyan that is given by Krishna like Arjuna. तो ज्ञान दिया था जिनको कृष्ण ने दिया था। So one scholar was asking Prabhupada, you say, we read your books, एक विद्वान उनसे पूछता है कि हमने आपके ग्रंथ पढ़े हैं। you write rascals. Why do you call people rascals? Some people are good, they are doing good things for the society, say rascal. What's wrong with you? So Prabhupada said, do you know what is good? How can someone who doesn't know what is good do good?
तो उन्होंने कहा कृष्ण पुरुष जो कहते हैं कि आप जानते हैं क्या अच्छा है, लेकिन जो अच्छा नहीं जानता वो कैसे अच्छा करेगा किसी का. And then Prabhupada explained, और उसका प्रभात ने व्याख्या करी. what is good, what is the highest good, what it means to do the highest good. सबसे अच्छा भला क्या है. And then he quoted the verse from Srimad Bhagavatam, 1 Canto chapter 2, text number 13. This verse, Sloka says, how does it start? Ata Pumbir Dvija Shrishta Vanashrama Vibhagasaha Anustistasyad Dharmasya Samsiddhir Haritoshanam. That in all varnas and ashram, whether one is brahmachari, grihastha, sannyas, vanaprastha, brahman, kshatriya, vaishya, or shudra, the highest good is that it is done when their activities are pleasing to Bhagavan. तो बताते हैं श्लोक होते हैं कि श्लोक बताते हैं कि जितने वर्णाश्रम धर्म है वहाँ ब्रह्मचारी गृहस्थ सब सन्यासी हैं या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, वो सब वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्नता के लिए है. तो That is dharma. वही धर्म है. What is dharma? Saha yagya pachachitva. You must do yaga to please who? Bhagavan. आपको यज्ञ करनी चाहिए जिससे कि भगवान प्रसन्न हो. All your work, everything that you do, it must be in line with your original nature, which is Bhagavan. That Zakir Naik doesn't know. तो आपके जितने भी कार्य हैं वो सारे फल प्राप्ति के लिए उसके संदर्भ में होने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो, और आप जाकिर नायक को पता नहीं. He doesn't know that. उनको नहीं पता. So some people, he can't defeat me. Because I'll ask, what is the purpose of religion? तो कैसे बहस करते हैं. You say you're Muslim, you're Christian, you're this, you're this. These are designations. Bhakti Rasam Vittasindhu says, Sarvopadi Vinirmuktam Tat Paratvena Nirmanam Rishikena Shivanam Bhakti Uchate. We have so many designations. I'm a Muslim, they are Hindus, they are Christians. This is not Dharma. These are just designations. I can say I'm from Mumbai, you from Chennai, you from Delhi, Mathura, like that. These are just places. But people are people. सब उपाधियां हैं और उपाधियों से हमको मुक्त होना पड़ेगा. कोई कह सकता है कि मैं मुंबई से हूँ, कोई कहता है मैं चेन्नई से हूँ, लेकिन सब क्या है? उपाधियां हैं. So he doesn't know that. तो ये उनको पता नहीं. Just like if you ask, what is the, how can you say, what does it mean to be religious according to you, Mr. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik? तो फिर पूछा जाए कि उनसे कि धर्म की क्या व्याख्या है आपके हिसाब से, तो क्या कहेंगे? The answer that he will give is the same answer that you will get from a Muslim who is not that educated. तो जो उत्तर देंगे वो आपको अलग ही प्राप्त होगा. The answer will be, there is only one God, that's Allah. तो Allah. एक ही ईश्वर है, वो है अल्लाह. And to be a Muslim, to accept that there is no other God except Allah. Krishna is not God, Ram is not God. They were a prophet who were later claimed by Hindus to be God. They were not God. जैसे कहते हैं कि अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है और ये सब जो हैं उनके अवतार हैं, राम और कृष्ण, जो कि उनके अवतार हैं और मेन सोर्स नहीं है. You will get that for most Muslims. सारे मुस्लिम से आपको यही सुनने को मिलेगा. If you ask Christians what it means to be religious, अगर आप क्रिश्चियन से पूछते हैं कि धार्मिक होने का मतलब क्या है, you get another answer. आपको गलत प्रकार का उत्तर मिलेगा. For Christians, the answer will be that one has to accept the suffering of Christ. That Christ allowed himself to suffer so that the sins of man can be redeemed. तो बताएंगे आपको कि आपको जीसस की भांति जो है कष्ट सहने पड़ेंगे. जैसे जीसस ने कष्ट सहे
ऐसे ही आपको सहने पड़ेंगे, तब जाके आपको मोक्ष प्राप्त होगा। Therefore, he loves you, और आप उनका कष्ट not your guru. Just Christ is the one who can save you. They will tell you that. Not your guru. Say, you have a guru. What guru? Only Christ can save you. तो कहते हैं कि आपके गुरु आपको नहीं बचा सकते, केवल जीसस आपको बचा सकते हैं। If you say, I have a guru, they will say, can that guru die for you? Like Christ. तो वो कहते हैं आप कहेंगे कि गुरु हैं तो चाहिए, तो कहेंगे आपको जीसस जैसा गुरु होंगे। Can that guru rise from death after dying like Christ? जो कि बाद में दोबारा रिसरेक्शन हुआ। So therefore only Christ can save you. They talk like that. तो वैसे ही कहते हैं। And then who else? The Jews, the Judaism. जुडाइज्म जो है, So if you ask the Jews, what does it mean to be religious? यहूदियों से अगर आप पूछे कि धार्मिक होने का मतलब क्या है, You get another answer. तो अगर I don't think people know Judaism. There's not so much in India. काफी लोगों को यहूदियों का पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रचलित नहीं है भारत में। But they are also Abrahamic religion like Christianity, and they originate from the same father, Abraham. तो वो भी जो है इब्राहिम के वंशज हैं, जैसे ही क्रिश्चियंस हैं, उसी टाइप से। But they differ in beliefs also. लेकिन उनकी जो So for the Judaism, the Jews, उनकी जो विधि है वो डिफरेंट है क्रिश्चियंस से। to be religious means to accept the laws of Moses, उनके लिए जो है मोसेस के जो नियम है, धर्म जो नियम है, वही धर्म है, which are found in the Torah or and the Old Testament in the Bible. और वो तोरा और जो टेस्टामेंट है बाइबल का उसमें मिलते हैं। And then you have to observe festivals like Yom Kippur, और उनको आपको जो जैसे वो त्योहार मनाते हैं वो मनाने पड़ेंगे। and the festival of Shofar. और शफा का फेस्टिवल मनाना You पड़ेगा, observe the Sabbath, you don't cook on Saturday. और सबत करना पड़ेगा। That's what it means to be religious. तब आप धार्मिक कहलाएंगे। So you come to the Hindus, you get different answers. आपको एक अलग प्रकार का उत्तर मिलेगा। Even if you ask Hare Krishnas, you get so many answers. अगर आप हरे कृष्ण से पूछेंगे तो भी आपको अलग प्रकार के उत्तर मिलेंगे। Some will say to follow four regulative principles. हमें चार नियमों का पालन करना है। Some will say to follow Prabhupada's instructions. कुछ कहेंगे प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन जरूरी है। Some will say to chant 16 rounds. कुछ कहेंगे कि 16 नियमों का 16 माला का जप करना। That's good, but it's not the answer. ये सब बढ़िया है, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। So the answer is in chapter 8 of Bhagavad Gita, verse number 5. तो उत्तर जो है उस अध्याय 8 में भगवद गीता है। That is called Smaran, to remember Krishna. भगवान कृष्ण का स्मरण ये अनिवार्य है। That was the answer given to Arjuna, who asked Krishna, how will those engaged in devotional service know you at the time of death? तो जो कृष्ण अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि जो भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं, वो अंत समय में आपका स्मरण आपको कैसे जान प्राप्त कर पाएंगे। So the answer Krishna says, Ante Kali Chamam Eva Yes, that's the answer. That's what it means to be Krishna conscious. यही जो है इस श्लोक में जो है जो आपको उत्तर मिलेगा कि कृष्ण भावनागत होने का क्या मतलब है। To remember Krishna. कृष्ण का स्मरण रखना। Everything that we are doing, whether it's cooking, worshipping the deities, Harinam Sankirtan, book distribution, reading Prabhupada's books, it has to increase our Smaranam. तो हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे हम कुकिंग भोजन पका रहे हैं, चाहे ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वर्शिप कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, या ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, सबका जो पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कृष्ण का स्मरण बना रहे हैं। If you meet Dr. Zakir Naya and he asks you what does it mean to be religious, so you should tell him it means
to remember Krishna. उनको बता दीजिए कि इसका मतलब है कृष्ण का स्मरण करना. Yes. So what is this Smaranam? ये स्मरण क्या है? Bhaktivinoda Thakur, also Prabhupada, somewhere I don't remember where, ठाकुर की बात उसको पता है. says that when Smaranam increases, when our remembrance of Krishna increases, ये स्मरण बढ़ जाता है तब it becomes dharana, ये धर्म बन जाता है. that concentration of mind. जो कि मन की एकाग्रता है. And then when dharana advances, तो धारणा आगे बढ़ती है. it advances to dhyan, like chapter 6, called Dhyan Yoga. धारणा से ध्यान प्रकट होता है. और ध्यान Dhyan means meditation. ध्यान का मतलब है. So how does meditation connect with Smaranam, remembering Krishna? इसको ध्यान स्मरण कैसे बढ़े? We remember the pastimes of Krishna and the places where those pastimes took place. तो हमें कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए और जहाँ पर कृष्ण ने लीला करी उन स्थानों का भ्रमण करना चाहिए. And then Dhyan increases to Dhruva Anusmrita. ध्यान से फिर ध्रुव समझता तक. Dhruva Anusmrita is when we begin to experience taste from our remembrance of Krishna. तो इस ध्रुव अनुस्मृति की अवस्था में हमको जो है रस आना शुरू होता है स्मरण का. After that we come to Samadhi. इसके बाद समाधि की अवस्था प्राप्त होती है. This remembrance of Krishna become part of us 24 hours. उसमें जो है 24 घंटे जो है कृष्ण का स्मरण बना रहता है. So that is Smarana. ये स्मरण And it's wonderful. I have a seminar, PowerPoint of the 12 forests of Vrindavan. ये बहुत आनंददायक है. महाराज जी एक सेमिनार देते हैं ब्रज के वनों के बारे में, 12 वनों के बारे में. So I take people to Vrindavan while they are sitting here, महाराज जी सब भक्तों को वृंदावन लेके जाते हैं. to those different places where Krishna performed pastimes. यहीं बैठे बैठे आप जो है वृंदावन का अनुभव कर सकते हैं. Just in the mind, whether they're in Brazil or England, they feel they're in Vrindavan. चाहे ब्राजील में चाहे इंग्लैंड में हो, लेकिन अपना क्या अनुभव करते हैं कि वृंदावन पहुंच गए हैं. So that is Smarana. ये स्मरण है. So that's the beauty of Krishna consciousness. ये कृष्ण भावना की दोनों उपहार है. So in this world there are 4 philosophies तो इस जगत में 4 प्रकार के दर्शन हैं which most religions borrow knowledge from. जिनसे कि सारे जो जितने धार्मिक सिद्धांत हैं सब अपना सीख लेते हैं सारे टेनेट्स के. One is mystic yoga, एक योगा as well as Mohinism. और मायावाद. Mohinism, like Buddhist, they believe in nirvana. बुद्ध. And then you have those who are Mayavadi and personalist. मायावादी, बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म. And then the other ones are personalistic, और जो है जो सगुणवादी. like Christians, some Christians. They believe that God is a person. जो मानते हैं कि भगवान जो He है has a son called Christ. क्रिश्चियन भी कुछ ऐसा मानते हैं कि जीसस को. We also believe God is a person. हम भी ऐसे मानते हैं कि कृष्ण जो है वो व्यक्ति है. Yes. So this Krishna consciousness is practical कृष्ण का थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान है. because if God is a person, it means He can reciprocate with your prayers. He can reciprocate with your feelings. कृष्ण अगर व्यक्ति हैं तो फिर उससे ज्ञान से संबंध बन सकता है. वो हमारे साथ आदान प्रदान कर सकते हैं. There is rasa. और उसी वजह से Just like one Brahmin, जैसे कि ब्राह्मण, he was traveling with an elderly Brahmin. You know the story of Shakshi Gopal.
तो वो एक जो है एक वृद्ध ब्राह्मण के साथ में घूम रहे थे वृंदावन में। So the elder Brahman made a promise in front of Sakshi Gopal, who was then Gopal. तो वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल के सामने जो है एक प्रतिज्ञा करी। And then the promise was that he will marry the younger Brahman to his daughter. तो उसने कहा कि आपको जो युवा ब्राह्मण है उसकी शादी में अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। So when he mentioned that to his sons, they said, no, you can't do that. It can't happen. तो बाद में जाके उसने अपने पुत्रों को बताया कि ऐसे मैंने प्रॉमिस कर दिया है, तो उन्होंने नहीं ऐसी शादी नहीं हो सकती। They accused this Brahman of being a cheater. और उन्होंने युवा ब्राह्मण को बताया कि आपने हमारे पिता के साथ छल किया है। The young Brahman said, but he made a promise in front of Gopal. So the sons of this elder Brahman, they laughed, you bring that Gopal here. Okay, he said, but the Murti, go and tell Gopal to come. So out of faith, the young Brahman went back to Vrindavan. He came in front of Gopal and said, Gopal ji, I have a problem. You remember two of us came here? That elder Brahman made a promise in front of you. Now there's a problem. He's denying making that promise. They told me to bring a witness. You are the only one witness. And then Gopal said, how do you expect me to go all the way to your place? I'm a Titi, I'm a Murti. So the Brahman, the young Brahman said, if you can talk, Gopal, you can go also. You can walk. Oh, Gopal said, oh, you believe that I can walk? Okay. He said, I will come with you then. But don't look behind. You will hear the bells of my ankles that I'm walking behind you. And then the Brahman went out of the mandir, started walking. Suddenly he heard behind Gopal is coming. Ching, ching, ching. He's coming. He walked and walked and walked. When he was near his home, he stopped hearing and he stopped and looked. Gopal was there. So he called the village. Yes, Gopal has come to be a witness. So people believed because no one can carry such a big deity alone all the way from Vrindavan. So the whole issue was settled very nicely. So this is Krishna, he can reciprocate. By Mahabharata, they don't have that ras. It's dry. Yes. So our philosophy is very nice. Krishna Bhagavan, he drove Arjuna's chariot out of love for his devotee. Just like one Brahmin was reading Bhagavad Gita, but he didn't understand anything. So many people were laughing at him. But when he met Sri Krishna Bhagavan in his incarnation of Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu asked him, I see you reading the Bhagavad Gita, but you are crying also. He said, I don't know how to read. But when I see this picture
where Krishna is the driver of our children, makes me cry. तो जब मैं देखता हूँ, ये मेरे को पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं चित्र देखता हूँ कि कृष्ण जो है वो अभी कदम हाथ रहे हैं, तो ये समझ आ जाता है। Mahaprabhu said, you understand Bhagavad Gita. तो समझ आ गया। That's the purpose of reading Bhagavad Gita. The mercy of Bhagavan Krishna is there, but no one gets it. Yes. So in that way, this bhakti process is real. We can relate to Bhagavan just as we relate as friends. Not that he is a cloud up there, like a Sunyavadi. No. It's something that we can relish and have experience of. Yes, these big pandits like Dr. Zakana, they are dry. They have no bhakti, just scholar. They don't know anything about ras. So therefore, they will die dry. Yes. We don't know where he's going. Yes, but in Bhakti everything is clear. Just like how much time we have. In India, time is unlimited. I'm used to the West. How many? Till 9, huh? Yes, including question answers. In question answers. Just like there was one Prabhu, one devotee, initiated devotees, him and his wife. I was taking care of them. They had 2 children. The elder child was a girl. It was a girl and a boy. The girl was an elder child. So she contracted cancer of the lungs. We tried everything, but we could not save that kid. So eventually she went for operation where they removed where the cancer was growing. Still, a few months later, cancer came back. Now it was all over. So then I realized there's nothing we can do. We can't really save her with medicines and operations. So then I called her, and one day I spoke to her. I told her, now you should do jap. I gave her beads, and I gave her one of Prabhupada's books called The Teachings of Queen Kunti. And I gave her a big picture of Radharani to put in her room. And then the girl started chanting, and she was reading. And then a week before she left her body, she started seeing things. She was seeing a Viman. Viman is a Viman. This Viman had beautiful people. They were calling her, saying, your time is over, you have to come with us.
उनके साथ जो गणित सर को कहते कि अब आपका समय पूरा हो गया आपको साथ में आना है हमारे। So she told her mom. तो उसने अपनी मम्मी को बोला The mom said, no, you are my daughter, you're not going anywhere. Tell those people you are not going with them. तो उसकी माँ ने बोला कि उनको मना कर दो कि तुम जो है मेरी पुत्री हो तुम कहीं नहीं जा रही हो। And the girl kept quiet. और बच्ची चुप हो गई। So the mother called me at the temple and said, my daughter is seeing, she's hallucinating. तो उनकी जो माँ थी उसने महाराज को फोन किया बताया कि इसको जो है कुछ अलग सा जो है hallucinations हो रहे हैं। So when I went to the house, महाराज के घर गए। I asked the mother to tell the girl, come and see me. I wanted to talk to the girl alone without the mother. I said, your mother say you are seeing some things. What are you seeing? She told me, I'm seeing a woman with beautiful people. They are telling me my time is up. I have to go with them. I said, do you want to go, little girl? She said, yes. I'm tired of this bug that is biting me inside. I said, okay, if you want to go, you can go. Don't worry about your mother. I'll stay here to make sure that she doesn't stop you. And then we parted. Next day, she left her body. Up to this day, I never told her mother that I gave her permission to go. Yes, she was holding her. Beautiful ending. She was chanting japa. She was reading Kunti. She was not crying. No. So she was remembering those exchanges between Queen Kunti and Krishna. So this is Maranam. I want to go. She said, yes, I want to go. Yes, she lost attachment to her family. She said, I want to go. So that is when Krishna has captured your heart. Some people go to Vrindavan and buy a t-shirt written, I lost my heart in Vrindavan. When they are coming with their heart fully to Ghaziabad. But when Krishna has captured your heart, you will not remember Ghaziabad. So this girl said, yes, I want to go. But my mother, I feel she's holding me. I said, I will stay here and make sure that she doesn't hold you. You go. And she left. Very beautiful. Yes. This is the result of chanting and reading and remembering Krishna. chanting का जपा का और बहुत सारा ज्ञान का और स्मरण का is working. और ये काम कर रहा है. Some people like Dr. Zakir Naik can say so many things. They don't know what is Bhakti. They don't know even where they are going. जाकिर नाइक जैसे लोग भी चर्चा कर सकते हैं लेकिन कोई नहीं पता कि रस क्या है और ये इस पर चर्चा तो ठीक है लेकिन कहाँ जाने पता नहीं. Okay, now we can take questions. अभी प्रश्न आप पूछ सकते हैं. तो जब आप प्रश्न पूछना चाहो Please raise your hands who want to ask questions. जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं हाथ खड़ा कर सकते हैं.
Hare Krishna Maharaj, please accept my humble lotus feet. Maharaj, my question is that, as you said that the Simran can lead to Samadhi, but generally we had a notion that Samadhi generally is done by mystic yogis. So even the devotees as a Vaishnavas, we can relate to this also. Samadhi. Yes, there is Samadhi that is attained by the yogis, Samadhi of Mayavadis, but the Samadhi of Bhakti is Krishna Prema. हरे कृष्ण। तो गुरु जी का प्रश्न कि जो आपने समाधि की बात करी, तो समाधि तो मैंने सुना है कि अष्टांग योग का जो एक पार्ट है, तो भक्ति में समाधि का मतलब समझ में पहली बार आया। बड़ा बता रहे हैं कि समाधि जो है हर स्टेज में होती है, अष्टांग योग में भी है, समाधि का अर्थ दूसरा है, मायावादी की समाधि का अर्थ दूसरा है, और भक्तों की समाधि का अर्थ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। थैंक यू। Hare Krishna. Hello, Hare Krishna. I want to ask that you talked about the girl who had gone through the cancer and she knew that she is going to depart from this world. But what happens to somebody who has to go, like for example, somebody has an accidental death? Accidental death. Yes. You want to know what happened to that person? Yeah. I mean, all your life you have been, say for example, a Krishna devotee, but at the time of accidental death, I believe that the other person does not know what's happening because it's sudden and you don't know what's happening at that time. माता जी का प्रश्न है कि आपने बताया कि लड़की के पास तो जितना कैंसर था, तो उसको उसने पूछा कि उसको दिखाई पड़ा कि उसका अकाल मृत्यु हो या किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, तो उसके संग एकदम से अचानक ही होता है सब कुछ घटित, तो उसके संग क्या होता है? Yes, we don't know what happens at that time. But, okay, what happens is that the mind of a person is like a computer. So when something happens, bang, and the mind will reflect. In other words, what is in us will come out now from our mind. Just like some children, sometimes they run around, chasing ball, chasing things in the house, suddenly bang, they fall and hit their heads against the wall. You know what happened? It will cry, Mama. Because Mama, Mommy is something that is ingrained in a child. It comes out naturally. He even call you sister, no, it comes Mom. Because she's Mama conscious. So in a similar way, in any situation of accident, if someone is a devotee who's constantly chanting, who is following, bang, Krishna will come out. I had this experience. I was coming from, I was in one African country, coming from Sankirtan. I took a public transport back to the temple. Like all Hare Krishnas, when I got into that vehicle, I slept. I fell asleep. I was tired. And then it went on. At some place, there was a bang with an oncoming traffic. Bang! We crashed. I was sleeping. So what happened?
Those people in a vehicle who were Christians, immediately they cried out, Jesus, Jesus, Jesus. I got up, oh, Jesus, what Jesus? Am I in a church? I was confused. I remember this verse, whatever state of being you are at the time of death, you will attain. Jesus, immediately, Christ Jesus. And then I had that, I got up, I was thinking, oh, what happened? Oh, I saw, no, we had an accident. So in that way, they were Jesus conscious. So when that accident happened, no mama came out. No one remembered anything. Remembered Jesus. So in a similar way, someone who is genuinely Krishna conscious, Krishna will come out. He will cry out, Krishna. Christians थे और जीसस कॉन्शियसनेस में थे, उनके मुझे जीसस की आवाज आई, मम्मी की आवाज नहीं आई। ऐसे ही जो कृष्ण भावनात्म में वास्तविक रूप से कृष्ण भावनात्म में है, उनके मुख से क्या निकलेगा? कृष्ण। Yes. So whatever happens, Krishna will come out from us. Okay. Hare Krishna Maharaj. Please accept my humble obeisances. Thank you so much, Maharaj, for your wonderful association. Maharaj, you told that the conclusion is remembering Krishna. That whatever we are doing, chanting, reading, Yes. regulative principles, everything should lead to remembering Krishna. Yes. But Maharaj, I am so degraded and so fallen that no matter how much I read, how many rounds I chant, I can never remember Krishna. You can. I'm not able to. You just need some training. तो माता का प्रश्न था कि हमने बताया कि कृष्ण का स्मरण जो है वो उद्देश्य है हमारे सारे भक्तिमय कार्यों का, लेकिन माता कह रहे हैं कि मैं अपने पतित हूँ कि मेरे को वो याद नहीं रहता, कृष्ण याद नहीं रहता, स्मरण रहते। हमारे कहते हैं कि आपको होगा, आपको कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। Yes, it's difficult to remember Krishna if we have so many other things also to remember. Krishna plus thousands of things. ये मुश्किल है कृष्ण का स्मरण करना अगर हम कृष्ण के साथ में हम बहुत सारी चीजें को याद रखना चाहते हैं। Yes, it's difficult. But the more you have lesser things to remember in your mind, and the remembrance of Krishna will become prominent. जब आपके मन में बहुत सारी चीजें हट जाएंगी या कम हो जाएंगी, तब अपना आसान हो जाएगा कृष्ण को याद रखना। You need training. इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। You need training. Training means the discipline of mind. प्रशिक्षण मतलब है कि मन की just like we go to school, and then we come under the authority of teachers, and they discipline us. They give us homework. They discipline us. In the end, we become disciplined. So in a similar way, in Krishna consciousness, we have to be disciplined in order to remember Krishna. Like for example, we do so many things. Like in the morning we say Samsara Dava Naladida Loka Tranaya Karunya Gana Ganatam Vastastata Karyana Rinana Vasya Vande Guru Sri Charana Ravinda Mahaprabhu Kirtana Nita Gita Varitamajana Sanasena
Romanjakam Basutaram Bajo Vande Guru Shicharanarabindam. We sing very nice and we dancers. That's not for dancing, that's for meditation. Samsara is this material world. Davanala is like forest fire. Do you feel like that? Yes, forest fire. सुबह मंगल आरती करते हैं तो उसमें गाते हैं, मंगल आरती गाते हैं तो नाचने की वस्तु नहीं है, वो जो है समझने की वस्तु है कि हमें जो है एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना होगा. Vande Guru Sri Charanarabindam. So it says this like forest fire. संसार के आवरण के समान है. The Guru is like a rain of cloud जो गुरु है वो that pours water to extinguish our material fire. जो भी हम वर्षा करके जो हमारी जो भौतिक आवाज में है, भौतिक डिजायर्स हैं, आशाएं हैं, उनको शुद्ध कर देते हैं. Yes, so the Guru is one who take pleasure in the Sankirtan movement of Mahaprabhu. गुरु हैं जो संकीर्तन महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं. So he talks about the Guru and his connection with Krishna. Shrivigaha Dananitana. He worshipped the deities. See? And the next one says what? Nigunja Yuno Ratikeri Shijay. He is one of the manjaris that assist Radha and Krishna in the Nikunjas of Raj. Beautiful. Do you meditate like that? No. So in that way, when we are trained and disciplined, our mind will be meditating on the meaning of these songs. And then later on we sing another song. Guru Bandana. What do you say? What it says? Guru Mukha Padima Bhakya Chite Te Koriya Kya Arana Koriyo Mane Asha. What we are saying? With my heart, within my heart, I accept the instructions of my Guru. I become one with them. Yes. So these songs are meant to help us to meditate on Guru and Guru's message. Yes, that's discipline. Otherwise, we just sing, 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 go home, sing, sing, go to the temple, sing, 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 have prasadam, go home like that. I'm a funny Swami, eh? But I'm telling you the truth. We need discipline. When I joined this movement, there was discipline. I took Diksha when I was 10 months in a temple. I was disciplined. 1 year I was twice initiated. I've learned these songs in 4 weeks. I had to memorize them to know the meaning and how to sing. Each and every stanza that I'm singing, I know what it means. So from the time I was young, I was a Bhakta, in that Bhakti training. महाराज ने जब ज्वाइन किया तो 10 महीने के अंदर महाराज की दीक्षा हो गई. तो महाराज ने 4 हफ्ते के अंदर ये जो भजन से सारे दिख रहे थे उनका अर्थ के सहित और उनके ऊपर ध्यान रखा था. तो अपनी उस ट्रेनिंग में वो देख के साथ में थे. So you need a type of training of your mind. Your mind is have so many things. आपको मन को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है अनुशासन में. Yes. Thank you, Maharaj. I will. एक प्रश्न था. Hare Krishna, Guruji.
अभी एक मिनट माइक आ रहा है आपके पास. Hare Krishna Guruji, my question is this: like there is lots of country, there is lots of thing where you choose to become any type other devotee, but why you choose Sri Krishna? और सब कुछ अलग परिस्थितियों में थे, लेकिन आपने कृष्ण को क्यों चुना? There's a famous song in India. It says what? Adaram Maduram Hasitam Maduram. I forgot, I don't know how it goes. So Krishna is sweet. Everything about Krishna is sweet. His face is sweet. His smile is sweet. His heart is sweet. Yes, that's why I was attracted to Krishna. तो महाराज देखा कि कृष्ण जो है बहुत ही मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनका हंसी मधुर है, उनका चलना मधुर है, महाराज जो है उस तरफ आकर्षित हो गए. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances and thank you very much Maharaj for the wonderful class. Maharaj, you very well explained the importance of the Smarana. In some places we heard that Shravan is also important, and some says that Sankirtan is also important. And so how to understand like which anga of the bhakti is to follow first, like Shravan, Kirtan or Smaran? All of them support remembering Krishna. गुरु का प्रश्न है कि आपने बताया कि स्मरण जो है वो रखना जरूरी है भगवान कृष्ण का, और लेकिन हमने सुना है कि श्रवण और कीर्तन भी करना जरूरी है, तो किस तरीके से बैलेंसिंग बिठाएं? तो महाराज ने बताया कि सब जो है सहायक हैं स्मरण के लिए, श्रवण और कीर्तन. Thank you. All of them lead to remembering Krishna. इन सबसे जो है हमको स्मरण रखने में सहायता मिलती है. Hare Krishna. Maharaj, my question is that as an instrument, how to introduce Srila Prabhupada to the new youth so that they can surrender to Prabhupada and gradually come to a level that they can fully surrender to Prabhupada? गुरु का प्रश्न है कि किस तरीके से प्रभात को पूर्णतः शरणागत होना है, नए लोगों में किस तरीके से पूर्णतः शरणागत होना है. Did you say something in Hindi? Yes, I told. Okay, it's easy. We have to be surrendered to Prabhupada ourselves first. तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि हमें पहले खुद को जो है प्रभात को शरणागत करना होगा. And when they see that in us, they will surrender to Prabhupada. तो हमारे साथ जब शरणागत करेंगे तो नए लोग भी शरणागत हो जाएंगे. This achara prachara. तो आचार प्रचार है. There is speaking, but that speaking has to be accompanied by our examples, how we practice that. तो बोल तो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिस में है या नहीं, हमारे आचरण में है या नहीं, उसका प्रभाव पड़ता है. You can't just get people to surrender to Prabhupada when you are not surrendered to Prabhupada yourself. आप किसी को शरणागत होने कह नहीं सकते कि आप कुछ शरणागत नहीं होते. If you love Krishna, you will attract people to loving Krishna because you love Krishna yourself. So if you love Prabhupada, you are surrendered to Prabhupada, the people that you preach to, they will sense that, they will pick up that from you. अगर आप जो है, कई लोग कहते हैं कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो, लेकिन अगर वो कृष्ण से प्रेम नहीं करते तो आगे कृष्ण से प्रेम कोई करेगा नहीं. इसलिए वो देख लेते हैं, आंक लेते हैं कि क्या आप शरणागत हैं. Yes. कोई और प्रश्न, किसी का प्रश्न कोई?
Hare Krishna Maharaj. Thank you so much for this wonderful lecture. Maharaj, as you told that the girl, she didn't have much time left when you saw her. So you provided her bean bag and the picture of Radharani. So as she didn't have much time left, what actually she did so beautifully that she got the association of Radharani? No, I gave her a bit back long before she passed away. When cancer came back. And then she died a few months after that, some months. But she had been chanting for several months, seriously. Maharaj, just like we are also going, but You are going. we only got few months and we are. No, you see, your chanting is different because you still you think that you have time. तो थोड़ी प्रश्न था कि जो है महाराज ने जो लड़की को जो है जबकि थैली दी और फोटो दी रानी की और उसने कुछ ही समय में जो है वो उसको उनका दिखाई पड़ने लगे, उनको स्मरण हो गया। तो ऐसा म्यूजिक कैसे हो गया? तो हमारा बता रहे कि उसको समय लगा, कई महीने हुए, जब दोबारा कैंसर आया तो उसके बाद ऐसी स्थिति हुई। माला कुछ महीने पहले मिली थी, तो फिर दोबारा प्रश्न किया कि लेकिन हम भी तो जब कर रहे हैं हमारे को वो नहीं आ रहा। तो हमारे कहने कि आपको पता है कि समय बहुत है। When you're young, you think, oh, I'm so young, I cannot get serious. Let me get older first. When you're old, you think, I'm too old. I can't really get serious. Maybe next life. We think like that. जब आप युवा होते हैं तो आप सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, अभी तो काफी समय है। तो बड़े तो कहते हैं कि अब समय नहीं बचा तो क्या करूँ, अगले दिन में देखेंगे। It's just like the story of Jagannath Puri. There was one Brahmin, he was living next to the mandir, next door. He used to think Jagannath is my neighbor. तो एक ब्राह्मण था जो कि जगन्नाथपुरी में रह रहा था, जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल बराबर में। सोच रहा था कि जगन्नाथ मेरे पड़ोसी हैं। So some devotees of Jagannath will ask, why are you not taking darshan? You just come and bring water and then you go. तो उन्होंने पूछा कि आप जो हैं जगन्नाथ दर्शन को लेते हैं, आपसे पानी लेके आते हो और रख के चले जाते हो। He used to say, Kal darshan karunga. Tomorrow I'll take darshan. Kal, came his time and took his life. He died without taking darshan. So we think like that. Kal, tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. It's really our fortune, due to blessing of Srila Prabhupada, that we have elevated devotees, pure soul like you, that we are having your good association here. We are really blessed. And my one question I just want to ask, that we have experienced that when we feel more in difficulty, we do smile to Krishna more. But when we are a little bit relaxed or not in difficulty, we forget or we do smile a little less. So, but we are not elevated like Kunti Maharani, and we always pray that we should smarna, chant Krishna always. But whenever we use our bad free will, we always feel, depart and little far away with the Krishna. So how to make our mind so determined to follow the Kunti Maharani's, Sikshas, teachings, and how to Smarna Krishna always being a Grasta, because I feel that in Grasta it is little difficult than other ashrams, because we have to balance other duties and services also, like in material life. So this Yes. is my request.
गुरु जी का प्रश्न है कि दुख में स्मरण सुख करें, सुख में तो लेना कोई हम सोचते हैं, लेकिन हम प्रार्थना ही करते हैं कि सुखी है, हम दुख हम चाहते हैं निकुंज बढ़ाने के तरीके से, और ग्रस्त में है तो हमारे से ग्रस्त में बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसे में स्मरण करें। Yes, Grihastha ashram is only the ashram that is temporal. You're supposed to be in Grihastha ashram for 25 years. गृहस्थाश्रम ऐसा आश्रम है जो कि पूरी तरह से शाश्वत नहीं है, वो अशाश्वत है, सिर्फ 25 साल तक के लिए आपको परमिटेड है। After that, you have to go to Vanaprastha. इसके बाद आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। But before that, we have to fulfill all the duties of Grihastha ashram. लेकिन उससे पहले जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य हमको पूरा निभाना पड़ेगा। But life has become so difficult that it's not easy to fulfill all the duties of Grihastha ashram. जीवन में समस्याओं से परिपूर्ण है कि कर्तव्य को निभाना बड़ा मुश्किल है आज के युग में। So that's what happens. तो इसलिए So that then to the question is that it's difficult to be advanced in Grihastha ashram. It's not true. It's just that there are so many things that nowadays people are facing in Grihastha ashram. But in Vedic culture, the Grihastha ashram was the ashram that supported others. तो प्रश्न ये है कि गृहस्थ में रहते हुए आदत उन्नति कैसे करी जाए, जो कि मुश्किल होता है, लेकिन हम वैदिक समय में देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम वो आश्रम था कि जो बाकी आश्रमों को सहायता करता है। Because it was like structured. तो वो आश्रम पूरा स्थापित था। So when one got married, तो शादी होती थी, he kind of like entered Grihastha ashram. You could say he took over his father's Grihastha ashram. तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो है अपने पिताजी के गृहस्थ आश्रम ले लेता है। So his father, before he left Grihastha ashram, took Vanaprastha. He left the ashram that was thriving. तो उनके पिता थे वो आश्रम को गृहस्थ आश्रम को छोड़ के नेक्स्ट आश्रम में चले जाते थे। There was wealth, तो उसके साथ में जो है and there was a setup. संपन्नता थी और एक सेटअप था। There were cows, there was everything. Nowadays, Grihastha, he has to start from the scratch. लेकिन अभी जो गृहस्थ जो हैं वो Because it's not easy to accumulate wealth that you can live for the next generation. तो तो ऐसा व्यवस्था होती है कि इतना धन एकत्रित कर लिया जाए कि जैसे अगले जनरेशन को भी कमाना ना पड़े। So as a result of that, people work for longer years. इसलिए जो है लोग ज़्यादा समय तक काम करना चाहते हैं। Because life in Kali Yuga is difficult. इसलिए जो है और ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं। So now, but we can still do something. फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। I was not a Grihastha. I don't know how it is. महाराज के गृहस्थ आश्रम में रहेंगे जिससे महाराज ने ज़्यादा। But in my kind of like smaller angle, it's like this. If someone wants to be a Grihastha, he has to accumulate wealth first. He must have property. And then after that, he can get married when he has wealth to maintain the family. And then he used to have goals in Grihastha ashram. Goals means he has to arrange in such a way that he can have time for spiritual life. But if you enter the Grihastha where you start from the scratch, it's very difficult. You have to work for somebody. That somebody would take all your time.
वो टूट जाता है and you won't have that kind of flexibility. और आपको सबसे ज्यादा उतनी सुविधा नहीं रहती It becomes difficult. तो मुश्किल हो जाता है Unfortunately, that's our situation. तो बात से ऐसी हमारी स्थिति है We have to work hard, many hours, हमको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है there's so many challenges. उसके अलावा भी बहुत सारे चुनौतियां Yes. But I was talking also, it's not just Grihastha. I was talking to some brahmacharis. I was saying, just like in marketing, there is an idea that you need to create your own identity or what they call brand. तो हमें जो ब्रह्मचर्य बात कर रहे हैं कि आपके समय चल रहा है कि अपना एक अस्तित्व जो है बनाने की बात चल रही है So in a similar way, if you are in a Grihastha ashram, whether brahmachari or sannyasi, it doesn't matter. ऐसे ही अगर ब्रह्मचर्य में या ब्रह्मचारी है संन्यास में But you must be governed by certain principles and values. लेकिन आपको यहाँ सिद्धांतों में जो आपको गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए Yes. Otherwise, if you are not focused, it means you are governed by something outside yourself. और अगर आप एकाग्र चित्त नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप कुछ और भावनाओं से प्रेरित हो रहे हैं But if you are governed by your own values and own principles, अगर आप अपने खुद के आपके जो सिद्धांत हैं उन पर चल रहे हैं and then you are in control. तो आप जो है But if you are controlled by work and so many other forces, and then you feel very thin, लेकिन अगर आप कार्य और अपने बाहर किसी चीज से प्रभावित हो रहे हैं it's very difficult. तो फिर बहुत मुश्किल है So creating a brand or creating identity means that you create an anchor where you are anchored. तो अपना अस्तित्व स्थापित करने का मतलब है कि आपका एक स्थापत्य होना चाहिए जहाँ पर कि आप अपना वही बना सकें These things sounds very complicated, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं but they are not that complicated. लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं It's just that I was not married. I have no personal experience that I can give you. ऐसा नहीं But it's like this. Okay, when I took sannyas, I'd never lived as a sannyas before. तो ऐसा नहीं कि अभाव नहीं होता तो कुछ कर नहीं सकते और अगले दिन संन्यास ले तो संन्यास I was a brahmachari. ब्रह्मचारी था पहले Brahmachari is just free life because you can marry or you can, you are flexible. ब्रह्मचारी में स्वतंत्रता होती है कि आप उसका शादी करें या ना करें So when you take sannyas, it's different. यदि आप संन्यास लेते हैं तो अलग व्यवस्था हो जाती है There are so many expectations from people. तो सबसे जो है आपकी तरफ से Some they think you have become an avatar. They expect some magic from you. या वो आपका होता है जादू चाहे रहते हैं जादू कर देंगे आप Some expect you to know all the answers. कुछ ऐसा होता है कि आपके पास सब प्रश्नों का उत्तर है So now, what to do? तो क्या किया जाए So you have to now sit down with yourself and create or choose how you're going to live as a sannyas. पड़ता है कि किस तरीके से आप एक सन्यासी जीवन बिताना चाहते हैं And then you follow that plan that you have created. फिर आपको उस प्लान को जो है जो आपने अपना So that applies to Grihastha life also. इसी तरीके से How am I going to live as a Grihastha? It's up to you आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि what type of a Grihastha you want to be. किस टाइप का ग्रंथ आपको होना है या आपका निर्णय आपको खुद का अपना Just as I've chosen what type of sannyas I want to be. जैसे महाराज ने निर्णय लिया कि किस तरह का संन्यास मेरे को ग्रहण करना है You see, I'm coming here. I don't have any child. No one travels with me, serving me. Since I took sannyas, no servants. तो महाराज ग्रह पर कोई उनका सर्वेंट नहीं है कोई सहायक नहीं है I live like a brahmachari. I wash my clothes.
When I go to see, so my life is very easy. Yes, it's very easy. I'm in control of my life. But if you have so many people serving you, and then they take so much energy from you, if I say to someone, I want my clothes ready by 12 o'clock, and that person forgets, and then it's a problem for me. Like someone took my clothes yesterday. It was like cloudy, cold. Say maybe that person took my clothes around what? I can't remember, just after breakfast. And then they asked, where are my clothes, Prabhu? So I will bring 6 o'clock. So he brings the clothes are wet. Okay. I put them in a plastic. And then when I came to what I call Patasat Mandir, I hang them there. I always carry washing line and the bags. I have even soap in my bag. I wash my clothes. So I hang them, they were dry, and now I pack them in suitcase. So now for me, I can wash my clothes and get them dry even if it's raining. I know how to do that because I've been doing this. My mother taught me to wash my clothes when I was 9 years. From 10 years old, he never washed my clothes. I've been washing my clothes since I was in primary school. For other people, they have mommy doing everything for them. They don't know what to do. Last time. So now, washing my clothes. He doesn't know how to take out clothes. He's baby. His mother made him baby. You see? I know how to wash clothes. I don't have a problem. I can wash them even if it's raining. If it's raining, or maybe after I wash my clothes, or it's raining now. Okay, it's raining. I take them to my room. I put my line there. I hang them. I put 2 heaters. They will be dry. But these boys who grow up being smothered by mothers, they are babies. They don't know what to do. They got confused. Yes, it's true. Many boys I say that they're just confused. But this mommy, is mommy consciousness. He can't do anything on his own. One girl told me about some of these kind of boys. She married one of such boys in London. She's from Nairobi. So this boy, the girl is working, she's educated also. She told me this boy, he come, he eat, sit in front of TV, he leave the plate there, he go and sleep. And I told him, I'm not your mommy, I'm your wife. I have to teach you how to be my husband. When you eat, go and wash your plate. And then she said, I told him, now, you see, I'm working, you're working. There's nothing like mommy's house there. I have to train you how to be a man. You can go and buy some subsies, I cook, you buy. She gave a list, sent him to the market, and there he met his mother. His mother shocked. And she called, hey, Tejal, how are you sending my son to buy your groceries? I said, madam, she's my husband, I'm teaching him how to be a husband. The mother-in-law was fuming. Said, this is my golden boy. Said, no, he's not your golden boy, now he's my husband.
That golden boy is finished. So in that way, the poor boy, he was just lost. So the mothers have to train boys how to be men by giving them responsibilities, because they will not be there forever. Yes. So sometimes the sannyas, we get such boys, they don't know how to do anything. They want to serve, but they don't know how to do things. It becomes a problem. Instead of being a help, it becomes your problem. Because they don't know how to do things. Yes. कई बार आपको सहायक के रूप में ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कि मम्मी को उनके साथ में होते हैं, मम्मी के द्वारा ट्रेनिंग तो फिर समस्या बच जाते हैं, लेकिन फिर सिखाना पड़ता है कि कैसे काम होता है. Yes, so that's the problem. So you have to choose now how you're going to live. Because there are so many problems. Yes, people are not trained. Then they become problem, and then spiritual life becomes difficult because we lack discipline. Yes, small things can become difficult. So to avoid problems, I decided I'm going to do my work because I already know how to do it. I don't need anybody else. I can cook even a Sunday feast alone. Yeah. Yes, I can cook, I can clean, I can do everything. Therefore, I don't have many problems with me. So you have to choose how you're going to live, even in Grihastha ashram. Otherwise, you end up, it's not becoming like a problem. Yes, that's what they call creating your identity, which means creating principles that will govern your life. How am I going to live? Yes, so we have to have that. Like for example, I can stay in a jungle and chant Hare Krishna. I don't need temples, mandir. I can do that. Because I go to the Amazon in Brazil. I preach to the tribes. I know I can stay in the jungles and chant Hare Krishna. I spent 2 weeks in the jungle chanting Hare Krishna. Just as I get up 3 o'clock in the jungle, also I wake up same time. And then I chant Hare Krishna. I carry my pots. I cook. Yes, I carry pots, I carry rice, my own oil, vegetables, and I cook. So it becomes easy for me because I know how to do it. But then you say, I'm going to preach in the jungle, you don't know how to cook, you don't know how to wash your clothes, it becomes a problem. Yeah, so it's become impossible. So you need to prepare yourself for something, or you need to live according to the training that you have. So in a family setting, you can also choose how you're going to live as a guest. When are you going to chant your rounds? How are you going to chant your rounds? How much time are you going to give to your puja? You have to decide according to the time that you have. What is going to be for Bhagavan in your life? What is going to be for you?
जीवन में दिखाने कितना because you must do yagya. क्योंकि आपको यज्ञ करना Saha yagya prajashikva. There are 5 yagyas for Kriyasta, 5 यज्ञ होते हैं गृहस्थों को but not for ISKCON people. इसको तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं It's just general Vedic Kriyasta. तो वैदिक गृहस्थों के लिए One yagya is that they give food to the beggars, the saint that come begging door to door, तो जो भिखारी आते हैं उनको खाना देना पड़ता है भोजन देना पड़ता है and then they give cooked food वो जो if there is someone starving in the neighborhood. अगर कोई पड़ोस में कोई किसी को भूख से परेशान हो तो उसको पका हुआ खाना देना पड़ता है And they also do fire yagya to appease the devils. और इनको तो ये करना पड़ता है देवताओं को प्रसन्नता के लिए They do another fire yagya to offer oblations for the benefit of their departed forefathers in the family. लिए भी जो है उनको अभिनंदन देने पड़ते हैं उनको And number 5, they do yagya of hearing shastra from saints that are traveling if they come in the area. और जो भी परिवार जी का आचार्य आते हैं उनके इलाकों में उनसे उनको श्रवण करने का भी यज्ञ करना पड़ता है Those are 5 types of yagyas for Kriyasta. ये 5 प्रकार के वैदिक प्रश्नों को करने पड़ते हैं Like when Prabhupada got first couples married in the West, जो प्रभुपाद ने पहले जो है आध्यात्मिक कपल को जो है उनकी शादी करी पाश्चात्य देशों में one couple came to see Prabhupada तो एक उनमें से एक दंपति आए प्रभुपाद के पास to ask him how should they live as Kriyasta. तो उनको पूछा पूरा से कि हमको कैसे गृहस्थ में रहना चाहिए So Prabhupada told them that when you cook, तो उन्होंने जब खाना भोजन पकाते हैं तो before you serve out, you should go outside and call whoever is hungry in that neighborhood तो घर से to बाहर come and join you. पुकारना चाहिए खाने से पहले कोई भूखा है तो आके खा ले So they thought Prabhupada didn't understand them. They went again next day. Prabhupada said the same thing. अगले दिन आए तो प्रभुपाद ने जरूर उनको वही का बात बताई So those are tasks. That's one of the yagyas for the Kriyastas, to give food. उनको पकाया खाना देना चाहिए बांटना चाहिए But ours is Harinam Sankirtan Yagya. लेकिन हमारा जो हरिनाम संकीर्तन लेके है Yes. You can chant Harinam at home आप घर में हरिनाम कर सकते हैं and distribute Harinam to your neighbors. और उनको अपने जो पड़ोसी को Of course, prasadam, you can distribute those. प्रसाद कुछ देना कर सकते हैं But the main thing is Harinam. लेकिन मेन मुख्य काम जो है क्या हरिनाम देना Yes. That complement all other yagyas. तो इससे बाकी सारी एनर्जी पूर्ति हो जाती है What is the difficulty? तो प्रभुपाद कहते हैं कि इससे क्या क्या समस्या है इसमें Yes, that's what I'm saying. It's an ashram that I've never been through, but that's what Prabhupada said. That we don't need to do many yagyas. We can do Haranam, and we can distribute prasadam to next door people where we stay, and invite them for Haranam at our home. Yeah. तो प्रभुपाद ने कहा कि हम यहाँ भी रहते हैं वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए हरिनाम करना चाहिए और प्रसाद का वितरण करना चाहिए ये पर्याप्त है Yes, we can give time to these things. Haranam, chanting with our family. हम जो है हरिनाम अपने परिवार के साथ में कर सकते हैं Even if we get together to chant for 10, 15 minutes, that's enough. 10 मिनट भी पर्याप्त है Yes. के साथ में करा लिया Sometimes, of course, people come so late at home. They leave early before the children wake up. They come back when they are sleeping. कई बार लोग जो है रात में देर से आते हैं जब बच्चे सो जाते हैं और सुबह उनको इतने पहले चले जाते हैं But on certain days when people are off, they can get together with family members and do chant Hare Krishna. लेकिन ऐसे लोग भी कभी सप्ताह में एक दिन निकाल सकते हैं साथ में इकट्ठे बैठ के हरिनाम करने के लिए It just depends on our situation. हमारी सिचुएशन कैसी है हमारा Sometimes people get jobs where they stay at work. कई बार आपको ऐसा जॉब मिलता है जहाँ पे आपको
काम करना पड़ता है, It's difficult. It's hard to say थोड़ा मुश्किल हो जाता है because of the job situation, and then becomes difficult to practice Harinam Sankirtan. नौकरी का जैसा भी स्थिति हो उसके हिसाब से मुश्किलें आती हैं। But the best thing is to change the job. सबसे अच्छा है कि ऐसा अगर कोई नौकरी है उसको बदल लेना चाहिए। But the problem is that there are not many jobs. You can't change. लेकिन समस्या ये है कि इतनी नौकरियां नहीं कि आप बदल सकें। Difficult. I know I was working before. इसलिए मुश्किल है। I was in the mining sector as an engineering mining. महाराज ने पहले जो है खनन जो इंडस्ट्री है उसमें काम किया हुआ है। महाराज ने INHC पर करते हैं। To get the job that I was doing, apart from your certificate, you needed to write an exam in that office. If you passed, and then you got the job. तो महाराज जो है वो इस बात के साथ साथ में और भी एग्जाम्स दे रहे थे कि अगर मेरे को मौका मिले तो नजर आ जाए और उसमें शिफ्ट हो जाए। It was difficult. मुश्किल था। So some jobs you may leave, but you can't get a job like that. कई बार आपको नौकरी करनी पड़ती है कि जैसे आप उसको बदल नहीं सकते। If you get one of very small salary, so it's difficult. कई बार जो है उसकी सैलरी बहुत कम होती है लेकिन डिफिकल्ट है, मुश्किल है। So we have to learn how to adjust according to our needs and area of interest. तो हमें उसके हिसाब से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है जैसे भी हमारी परिस्थिति में। Yes, we should be able to know what we need. Otherwise, giving out a job also can be a big mistake. हमको पता होना चाहिए कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति तो जितना संभव उतना हमको प्रयास करें। Because there are not so many jobs available. क्योंकि नौकरियां अपनी उपलब्ध नहीं हैं। Yes. So I think that's enough on Kriya Sasha. Thank you so much. Maybe next time you can invite me to your job and your home. I will be able to sit and advise you how to adjust. Yes. मुझे अपने घरों में इनवाइट कर सकते हैं कि मैं देखता हूँ कि आपकी कैसे एडजस्टमेंट आपके घर में हो सकती है। But Prabhupada, in one of his books, or in Bhagavad Gita, that is chapter 9, verse number 30. Yeah. That verse says, Apichet Sudhiracharo, that a saintly person should be considered sane even though he may commit abominable activities. So in the purport, Prabhupada write that we have two kinds of duties. We have what is called conditional duties, and then we have constitutional duties. If these two run parallel, if they match, we do both. But if they diverge, we stick to our constitutional duties. Even that is difficult. But it's a fact. But in Kali Yuga, it's difficult. Yes. But we can adjust depending on our situation. Yes, it's just as I was saying, that applies to sannyas ashramos. We have to choose how you're going to live as a sannyas. I've chosen to live like how I'm living. It's good for me. Because my mother prepared me for this long ago, unknowingly. She even taught me how to put a button when it was out, how to stitch it back.
9 years. This is how you use cotton this, in a needle to put these ones on your school shirt when they come out. I still do those things. I still travel with needles and cotton. My coat has come out and then I fix it. My mother taught me when I was 9 years and liberated me. Yes, so it's easy for me to live the life that I'm living because I know everything. My mother told me. I was doing my things since I was a kid. Yes. So las sannyas, brahmachari was easy because I knew how to clean, how to sew my things, how to, yes, for other people it's difficult. So we should choose a way of life that is good for us, that will work for us. We are different people. But one thing that we should never forget is to always remember Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. So now it's time to go to next place, what I call Faridabad. Ghaziabad. There's Ghazia. Yeah, Ghaziabad. Okay. Huh? Ghaziabad, yes. I'm going there for the first time. Ghaziabad. Hare Krishna. So we would like to thank Maharaj Ji for his wonderful association. Despite of his busy schedule, he has been traveling all around the world, especially in India, blessing all the conditioned souls with his kind association. So today we are fortunate that we got his association, and he very elaborately told us about what is religion, what is real religion, what is Smaran, and how can Smaran actually lead to realizing the real religion, right? So many wonderful examples and stories from his own life, from the life of devotees. Maharaj told us to enlighten us on this really difficult subject matter of Bhagavad Gita. So thank you, Maharaj, for your wonderful association, for your kind association on all of us. We would like to thank Maharaj by chanting loudly, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And we request, if you are here in India in the upcoming months, please, if you have some time, please do visit us again. Do provide your association once again to us. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. So, some announcements. Today is Sunday of Feast Prasadam. So, I would like to call upon Mr. Raghuvansh Singh Ji. Is he present here? Raghuvansh Singh Ji हैं यहाँ पे? तो उनकी तरफ से आज के प्रसादम में योगदान है. उनके पिताजी की डेथ एनिवर्सरी वर्षगांठ पे जो उन्होंने वैष्णव भोज के लिए आयोजन किया है, तो उनके लिए हम एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे. यहाँ पे प्रभु जी हैं? ओके, तो सभी मिलकर उनके परिवार के लिए जोर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. One more important announcement. Tomorrow 8 a.m. सुबह 8 बजे कल we'll have one more chance to have association of Maharaj Ji in Ghaziabad temple. 8 बजे सुबह कल श्रीमद् भागवतम लेक्चर महाराज जी के श्रीमुख से हमें सुनने का अवसर मिलेगा. चैतन्य चरितामृत पे लेक्चर होगा महाराज जी का सुबह 8 बजे कल गाजियाबाद मंदिर में.
So I would request if you all can, I mean, whosoever have time, कल सुबह जरूर से जरूर पहुँचे गाजवा टेम्पल एंड महाराज जी को श्रवण करें। आज सभी को आनंद आया? और फिर से महाराज जी के लिए बोलेंगे जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Few more announcements before we actually stand up for Aarti. So, हिंदी में कर रहा हूँ announcements, ये सभी आप जानते हैं। फर्स्ट थिंग इज गाजियाबाद में हमारा बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, आप सभी को मालूम है, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइड ऑफ गाजियाबाद, इस्कॉन वेव सिटी। तो बहुत बड़ा ह्यूज मंदिर बन रहा है वहाँ पर श्री राधा मदन मोहन जी का। आप सभी से प्रार्थना है इस मंदिर के लिए जरूर से जरूर योगदान दें ताकि वो जल्दी से जल्दी तैयार हो। बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जल्दी तैयार हो और हम सभी मिलकर जो है उसके उद्घाटन में, डीटी इंस्टॉलेशन में, इन सभी कार्यक्रमों में, उत्सवों में सम्मिलित हों। तो जो भक्त कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, हमारे बीच में इस देश माधव सेवा प्रभु जी हैं, हमारा प्रभु जी से संपर्क कीजिएगा जिस भी तरह से आप जो है कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। दूसरा, हर मंगलवार को हमारे सेंटर पर जो है खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाता है। लगभग 10 समय में किसी बात हो जाता है, लगभग 1002 में, यानी 1000 भक्तों तक हम खिचड़ी प्रसाद बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें भी आप जो है सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हमारे सेंटर पर हर वीरवार को युवाओं की क्लास होती है, जो संडे को शिफ्ट हो गए हैं 3 बजे से। नहीं, वो अलग है। तो हर वीरवार को यूथ क्लास होती है शाम को 7:30 बजे। तो जो यूथ भक्त जो अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे बीच में, तो प्रभु जी हैं, हमारे ऋषभ जगमोला प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं। सभी जो 15 साल से जो ऊपर के युवा हैं वो सभी। हर रविवार को बालिकाओं की क्लास होती है दिन में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। बोथ इस ग्रुप 6 to 14 and 14 above सबके लिए जो है क्लासेस हैं एवरी संडे। इसके अलावा हमारे सेंटर पर हर शनिवार को भी जो है शाम को छोटे बच्चों की क्लास होती है। हमारे बीच में हर ग्रेस आनंदिता राधिका माता जी प्लीज है। जो भी छोटे बच्चे हैं एज ग्रुप 5 to 12, तो 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको अगर आप स्पिरिचुअल एजुकेशन देना चाहते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से स्टोरी फॉर्म में उनके एज ग्रुप के हिसाब से डिजाइन किया गया कोर्स है, तो माता जी से संपर्क कर सकते हैं। और जो गर्ल्स की क्लास होती है संडे को, उसके लिए आप हर ग्रेस दयामयी गंगा माता जी से संपर्क कर सकते हैं, जो भी गर्ल्स हैं, और पवित्र गोपी देवी दासी इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सेंटर पे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए हम नित्य सेवा के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर महीने हम छोटा अमाउंट हम जो है भगवान की सेवा के लिए डोनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जीवाश्रय जनार्दन प्रभु जी हमारे रिसेप्शन पे हैं और हिज ग्रेस मुक्तेश्वरी प्रभु जी, उनसे संपर्क कीजिए रिसेप्शन पे। और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, आप ये के प्रकार हैं जैसे भी जो भी सेवा आप कर सकते हैं इन सेवाओं में पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे महाराज जी ने आपको बताया, स्मरण जो है वो तभी बढ़ेगा जब हम सेवाओं में, है ना, भगवान की सेवाओं में, भगवान के कीर्तन में, इन सभी में संलग्न होंगे। तो ये जो सेवाएं हैं ये एक माध्यम है। एंड वन लास्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, 31 दिसंबर 31 दिसंबर को हम सभी जो है नए साल की शुरुआत करेंगे, नए साल का स्वागत करेंगे मेगा हरिनाम कीर्तन के द्वारा। प्रोग्राम होगा शाम को 6 बजे से लेके मिडनाइट तक, फ्रॉम इवनिंग 6 PM to 12 PM midnight. We'll be celebrating New Year Eve, this coming New Year. So the welcome of New Year with a huge melodious Harinam Sankirtan. So you all are kindly requested to please join us in that. 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में समय अपनी ज्वाइन कीजिए, कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए, डांस, ड्रामा, पूरा पैकेज है आपके लिए। और उसके बाद कृष्ण प्रसाद शुरू में भी और बाद में भी, है ना। तो सभी आइए और आनंद उठाइए। हरे कृष्णा। अभी हम आरती के लिए सभी भक्त खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे और उसके बाद आप सभी के लिए स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद की व्यवस्था है। सत्संग करता हूँ।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare
Prabhupada